बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2, टूल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। सो हियर वी हैव सेकंड चैप्टर ऑफ आवर बुक टूल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। 86-15 का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने मैनेजमेंट डिस्कस किया था। आज मेजर tools that will be utilized to create a precise educational environment. So today we will discuss एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? कंट्रोल चार्ट्स, गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये फर्स्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। और लेटर वन program evaluation and review techniques and planning program budgeting system that will be discussed in our next video. So kindly stay tuned. और आज हम इन 3 बेसिक मेथड्स को, ये 3 बेसिक जो टूल्स हैं जो एजुकेशनल मैनेजमेंट में यूज होते हैं, इन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोल चार्ट, सीसी, जीसी एंड सीपीएम, तो इन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सबसे पहले हमें मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट और उसके इम्पोर्टेंस का आइडिया होना चाहिए। Provide useful insight to management, optimum utilization of resources and effective administration, scientific decisions, meeting changing environmental requirement, fulfill social responsibility, fair animation, management training, education and research. Messengers have come to cure an attitude titled toward research and development. So that is a key importance of our educational management. तो सबसे पहले हमारे पास एजुकेशनल मैनेजमेंट को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए कौन से मेजर टूल यूज हो रहे हैं। सबसे जो बेसिक टूल है दैट इज द कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट में आपको इसे सीसी से भी प्रोनाउंसिएट किया जाता है। द कंट्रोल चार्ट इज द ग्राफ दैट इज यूज्ड टू स्टडी हाउ अ प्रोसेस चेंज ओवर टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें कितनी तब्दीली आ रही है। डेटा आर प्लॉटेड इन टाइम ऑर्डर। कंट्रोल चार्ट ऑलवेज हैज अ central line for an average and upper line for the upper control limit and the lower line for the lower control limit. These lines are determined from the historical data. तो कंट्रोल चार्ट में आपके पास 3 तरह की लाइंस होंगी। दरमियान वाली लाइन एवरेज पे होगी, upper line that will be shows upper control limit और lower line that shows the lower control limit. ये limits किस तरह से आप बनाएंगे? that will be created from historical data. तो यहाँ पर आपको एक कंट्रोल चार्ट शो हो रहा है कि जो आपके पास सेंटर लाइन है, ये जो हल्की ब्लैक रंग की लाइन है, ये CL है, सेंट्रल लाइन, ये लोअर लाइन और ये अपर लाइन। तो अगर आपके पास इवेंट इन लोअर और अपर से बाहर जाए, उसकी वैल्यू लोअर और अपर से बाहर जाए, देन यू विल बी रिपोर्टेड एज यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो हमारे फ्रेम से बाहर जा रहा है, इसलिए हमें कुछ इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि पहले जो 10 पॉइंट्स हैं या 10 आवर्स हैं, या इनमें जो टाइम है, या टाइम ले लें, मंथ ले लें, ईयर्स ले लें, स्टूडेंट्स ले लें, यहाँ पर जो आपका सिस्टम है या प्रोडक्शन है या जो आपका टूल है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है मीन के अप्स एंड डाउन्स और अपर और कंट्रोल लोअर लिमिट के बिटवीन है। बट एट 11th जब आर स्टार्ट हुआ, दैट विल बी गोज आउट ऑफ कंट्रोल। तो हमें यहाँ पर ये जज हो जाता है कि किस पॉइंट पर कब क्यों ये जो चार्ट है कब ये आउट ऑफ फ्रेम चला गया है। तो 11th आवर में ये हमें आउट ऑफ कंट्रोल शो कर रहा है। तो दैट शोज कि हमें यहाँ पर अंदाजा हो जाता है कि फलां टीचर या बच्चा या जो मेथड है या इंस्ट्रूमेंट है वो कब आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है इन सी। और नेक्स्ट चार्ट है हमारे पास गैंट चार्ट। गैंट चार्ट इज a chart in which a series of horizontal lines shows the amount of work done or production completed in certain period of time in relation to the amount of plan for those period. Gantt chart are useful for planning and guiding project. They are most appropriate for small to medium sized project, but can be used for larger projects such as a capital project on ocean. They are ideal for most planning projects that a department or a college would be involved in.
तो यहाँ पर आपके पास गैंट चार्ट जो छोटे या मीडियम साइज के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें गैंट चार्ट का यूज किया जाता है कि यहाँ पर आपको आइडिया मिलता है कि आप किसी फ्रेम पर किसी स्टेज पर कितना टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप उस फेज या उस स्टेज पर टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं यू मे बी कंसिडरेट कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेनली वो एक स्पेसिफिक फ्लो के बारे में आइडिया मिल जाता है कि आपने उस फेज या उस स्टेज तक कितने आवर तक स्टे कर सकते हैं। और गैंट चार्ट, सिंपल गैंट चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय हियर के प्लानिंग के लिए, प्लानिंग यानी कि मेरी जो है लेट्स सपोज कि वो जनवरी से लेकर मार्च तक वो प्लानिंग चलेगी और मैंने जनवरी के एंड में और अप्रैल के स्टार्ट तक मैंने रिसर्च करनी है। डिजाइन स्टेज मैंने इस तरह, यानी कि आपके पास डिफरेंट लाइंस के जरिए यहाँ पर आपके पास टाइम आएगा, यहाँ पर आपके वो स्टेप्स आएंगे, वो स्टेजेस आएंगे जो आपने रिसर्च में एवेलुएट करनी है या प्रोजेक्ट में यूज करने हैं स्टेप्स। तो दैट दीज लाइंस शोज योर टाइम एट दैट स्टेज। फर्स्ट स्टेज पे मैंने इतना टाइम स्पेंड करना है, सेकंड स्टेज पे ये, थर्ड पे ये। तो यहाँ पर आपके पास फॉलो अप विजट्स, तो फॉलो अप विजट्स मेरे पास यहाँ पर 17 जून से 17 जुलाई तक आ रहे हैं। तो इस तरह दीज horizontal lines which shows the time which is spent at a specific step। तो अगर मेरा यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मुझे डिसीजंस लेने चाहिए कि मेरा अदरवाइज मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर भी डिले हो रहा है, फिर डिले होता होता वो चीज़ें जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी। सही। तो इस तरह आप ये सिंपल गैंट चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टू ड्रा अप अ गैंट चार्ट, टू ड्रा अप अ गैंट चार्ट फॉलो दीज स्टेप्स। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज इन द प्लान, head up graph paper with the days or weeks through completion, plot task on the graph paper, schedule activities, presenting the analysis। तो ये 3 से 4 स्टेप्स को आप फॉलो करके जो गैंट चार्ट है वो इजीली बना सकते हैं। और आज का जो थर्ड टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज अ CPM। CPM means critical path method। Critical path method is an analysis in an algorithm for scheduling a set of project activities. A critical path is determined by identifying the longest stretch of dependent activity and measuring the time required to complete them for स्टार्ट टू फिनिश। यहाँ पर भी आपके पास जो बेसिकली जो लेआउट है वो उसी तरह का बनेगा, बट यहाँ पर जो एल्गोरिदम है इसको लिखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप उस फेज पर या उस स्टेज पर कुछ आपको टाइम ज्यादा लग जाए, यू हैव एन अदर स्टेप, यू हैव अ प्लान बी, यू मे फॉलो द प्लान बी एंड मूव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। अगर किसी फेज पर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप नेक्स्ट जो प्लान बी या प्लान सी का जो कंसेप्ट हमारी कम्युनिटी में यूज होता है कि वो आपने प्लान यूज करना है एंड यू हैव टू फिनिश योर प्रोजेक्ट। In project management, our critical path is a sequence of project network activities which add up the longest overall duration, regardless if they are that longest duration has float or not. This determined the shortest time possible to complete the project. There can be total float, unused time within the critical path। तो CPM को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास इस तरह से स्टार्ट से फिनिश तक जाना है, हाउ यू विल कंप्लीट योर पाथ। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट पॉसिबल प्लान ए, प्लान बी, यहाँ पर फर्दर प्लान्स आपके पास हैं। अगर मैं इस मेथड से जाऊँ या इस रास्ते जाऊँ तो मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा। तो हेयर वी हैव अ प्लान के कहाँ पर मैंने कितना टाइम स्पेंड करना है। अगर ये वाला रास्ता लिया जाए तो हमें टोटल 6 वीक्स दरकार होंगे, इधर से हमें 4 वीक्स। अगर मैं प्लान बी यूज करूँ तो मेरे पास जो 7 वीक्स यूज होंगे। तो here we have a layout to complete my task more precisely and up to time। टाइम पे चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Key steps in a critical path method. The process of using critical path method in project planning phase has 6 steps: activity specification, activity sequence establishment, network diagram, estimate for each activity, identification of the critical path diagram to be show project process। तो आपने डिफरेंट क्रिटिकल पाथ जो हैं वो शो करने हैं कि दैट विच वन इज मोस्ट सुटेबल फॉर योर
project and provide a optimum method or optimum path to complete your project more precisely and at a given time period. यहाँ पर कुछ methods advantages mention है कि what are the major advantages of critical path method. तो offers a visual presentation of the project activity, present the time to complete the task and the overall project tracking of critical activity, define the required task and put them down in an order, create a flowchart and other diagram showing each task in relation to other, identify the critical and non-critical relationship among tasks, जो different path हमने अभी discuss किए, define the expected completion and execution time for each task, locate or devise alternatives backups for the most critical path. तो यहाँ पर आपके ये बेसिक जो स्टेप्स हैं ये यहाँ पर बताए गए हैं कि ये बेसिक एडवांटेजेस जो हैं हमें क्रिटिकल पाथ मेथड में जो हमें मिलते हैं. Hope you understand. If you feel any query, you may write in the chat box. As a critical path analysis, the critical path is a sequence of activity with the longest duration. A delay in any of these activities will result in a delay of the whole project. Below are the some critical path example to help you to understand the key elements. यहाँ पर हमने कुछ path जो हैं वो discuss किए हैं. यहाँ पर आपके पास है flow determination. Once you identify the critical path for the project, you can determine the flow of each activity. Float is the amount of time an activity can slip before it causes your project to be delayed. Float is sometimes referred to as a slack. Float is the amount of time an activity can slip before it causes your project to be delayed. Float क्या है कि आपका टाइम ड्यूरेशन जो एक एक्टिविटी या एक स्टेज को कंप्लीट होने के लिए दरकार है. तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पाथ है कि अगर वो वाला पाथ रन नहीं होता, यू हैव टू मूव नेक्स्ट पाथ. यू हैव अगर वो नहीं रन होता तो आपको नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए कितना टाइम दरकार है, उस स्टेज से निकलने के लिए हाउ मच टाइम यू रिक्वायर्ड, दैट वुड बी नोन एज अ फ्लोट. और यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड, डिसएडवांटेजेस मेंशन है कि व्हाट आर द मेजर डिसएडवांटेजेस. पहले हमने एडवांटेजेस देखे, अभी हम कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे. The CPA process can becomes complicated as the scope and the extent of the project increase. Too many interconnection activity can result in the network diagram become more complicated. The CPA depends on the fundamental concepts that the managers and personals involved in the project team as well versus with the various activities. Unfortunate practical experiences has shown that the principal assumption underlying CPM techniques, that is the project team ability to reasonably predict the scope, schedule, and cost of each project, each step, infrequently far beyond control. The task of understanding the need of critical path get more complicated when there is more than one critical path in project. In many cases, as the project progress, the critical path might changes and involves and pace critical path may no longer be valid and new CP have to identify for the project and regular interval. The use of total float as a measure of assigning activity to their representative path can become problematic when analyzing a build schedule. So these are the major disadvantages of CPM. Or here we have some more disadvantages of CPM. A critical path and float changes the scheduling of personnel also changes. Reallocating of personnel is often very tricky as the individual might be working on more than one project at a time. Very often, critical paths are easy to identify, especially if the project is unique and has never been undertaken by the organization in past. Traditionally, any good CPA requires that the process is understood and evaluated using the forward and backward pass
to determine slats and flow time. In reality, however, the time constraints often result in decision made in choosing only one method to find the time and cost requirements. CPA and network diagram are highly dependent on the information technology and computer software. The cost of setup of software system is in the organization can have highly initial cost. Organizations are also becoming increasingly global and political. In order to improve profits, it is necessary for companies to streamline their operations to maintain their position in a constantly evolving project market. So these are the major drawbacks of CPA. How you will evaluate and how you will discuss that more precisely by uh, handling these major disadvantages. And in next lecture, we will discuss program evaluating and reviewing technique, which methods or advantages or disadvantages थे आपको CPA के, और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो बेहतर सादा सी जबान में समझने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे लेआउट मिल जाते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को या अपने जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं. बट इसका जो मेजर ड्रॉबैक है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग फॉर अ लेमैन, एक सादा आदमी के लिए बहुत मुश्किल है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत एक्सपेंसिव है और उससे जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाती हैं. और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनिशियल कॉस्ट जो है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड को रन करने के लिए वो कुछ ज़्यादा है बनिस्बत CC एंड Gantt chart. So I hope you understand the topic, and if you feel any query, you may write in the chat box. Thank you so much. Kindly subscribe our channel. Bye.